Welcome to We Learn. This is session 2 of ERP and CRM. Today we are going to cover different topics like what are the IT requirements for ERP, what are the advantages of ERP, disadvantages of ERP. We will discuss some ERP packages that are available in the market, right? Then we are going to discuss the benefits of using ERP, types of ERP application, right? So let us start the first topic of today's session, that is the IT requirement. Now, from the point of view of IT, ERP basically involves different components. First one is online instead of batch processing. When we talk about the online system such an interactive system in which the processing of data occurs at a particular instant of time without any delay. When the result of transaction can wait for some minutes, then in that particular situation we prefer to use the online processing. So one of the requirement for the ERP is online instead of batch processing, because ERP totally focus on to the speed part. So online is the only mode by which you can process the data within the minutes or within seconds, right? Now what is batch processing? Batch processing involves the collection of data for several years sometime, like सेंसस कैलकुलेशन. इंडिया की अगर पूरी पॉपुलेशन की कैलकुलेशन करनी हो, पूरा एक राइट एग्जैक्ट फिगर निकालना हो, सो इट्स नॉट ए वन डे जॉब, even it's not a 1 month job, it will take lots of time, even sometime years. So this sort of mode of processing is basically called as a batch processing. So ERP basically focus on to the online instead of batch processing, right? Next is client server system. Client server system is basically such a concept that we use in the networking, when lots of computer they are connected together by some means of topologies, right? सो क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर में भी बेसिकली एक कंप्यूटर को हम सर्वर बना देते हैं जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है अदर रिलेटेड कनेक्टेड कंप्यूटर्स को, एंड अदर रिलेटेड कनेक्टेड कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट कंप्यूटर्स, राइट? सो क्लाइंट सर्वर सिस्टम इज एक सच ए कॉन्सेप्ट इन विच client asks for the services from the server and server basically fulfills the request, right? So this is client server architecture is further of two types. First one is two tier architecture and next one is three tier architecture. When we talk about the two tier architecture, then there are only two components that we have discussed. One is said to be the client and other is said to be the server. That computer which asks for the services is called as a client computer, and another computer that fulfills the request of the client is called as a server computer. So this was an example of a two tier architecture. In three tier architecture of the client server system, there are third component apart from the client and server. This is called as a middleware. Sometimes client sends a request, that request is not validated and it is being returned by the server, as it is being done in the two tier architecture. So sometimes it was observed that server was busy in solving some useless problem, in its time get killed. So this thing motivated to brings about a middleware in which client firstly does not interact with that of the server, it has to interact with the middleware first. So middleware will be responsible for checking all the parameters that should be validated at the server end before it is actually submitted to the server. सर्वर पर जाने से पहले क्लाइंट की रिक्वेस्ट को मिडलवेयर के पास जाना होता है थ्री टायर आर्किटेक्चर में, और जब वो सारी वैलिडेशन चेक हो जाती हैं, देन ओनली this data or this request is moved from client to the server. It means whatever amendment, whatever modification, whatever updation it has to be done by the client, it will be instructed by the middleware. So it reduces the server's efficient time
So it gives rise to a more productive environment in the networking, right? Another thing is relational DBMS. When we talk about the relational DBMS, it means SQL Server, Oracle. रिलेशनल डीबीएमएस में हम डेटा जो ऑर्गेनाइजेशन का हम स्टोर करते हैं ईआरपी में, दैट इज़ इन टर्म्स ऑफ टेबल्स, एंड टेबल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम. इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम. इन रिलेशनल डीबीएमएस में अगर हम बात करते हैं तो हमें दो टर्म समझने हैं रोज एंड कॉलम के रिस्पेक्टिव में. रोज आर सेट टू बी द टपल्स एंड कॉलम्स आर सेट टू बी द एट्रीब्यूट्स. अब रिलेशनल टेबल्स बनती हैं, उसमें डेटा स्टोर किया जाता है, उसके बेसिस पे ईआरपी टेबल जनरेट होती है. ईआरपी टेबल के बेसिस पे हम उसका ईआर डायग्राम प्रिपेयर करते हैं, फिर उसकी डीएफडी बनाई जाती है. तो इस टाइप से पूरा फ्लो ऑफ डेटा हम समझ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल डीबीएमएस. पूरा ट्रांजैक्शन लॉग्स को समझा जाता है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट फ्लो ऑफ डेटा दैट इज फ्लोइंग अक्रॉस द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द system. Next is graphical user interface. It is an interactive interface that is being used by the ERP to maintain the thing, right? Another is web-based application. Web-based application means we are able to have some web-based application like web server and websites by which we are able to have like links on which we can put the entire data of the organization in such a way so that every user of the system can access it easily. Because if the data is available on the web server or web based application, it will be globally available. It cannot be like depend on some entities. So data will be available in a 24/7 format, right? Apart from this, वेब बेस्ड एप्लीकेशन में हमारी ट्रेसिबिलिटी भी होती है, ट्रैकेबिलिटी भी होती है. वी आर एबल टू हैव द डेटाबेस कनेक्टिविटी विद दिस ऑल्सो, राइट? नाउ लेट अस डिस्कस सम एडवांटेजेस ऑफ द ERP. Elimination of redundant data and procedural operation. If the whole processing of the organization is now available on ERP, then ERP will be responsible for reducing the duplicacy of data. Not only reducing, rather eliminating of the duplicacy of data. And every operation, every task, every transaction will have to follow a particular procedure, a set of instructions, if you are working data or you are managing the things with the help of ERP. Compulsive use of best practices means ERP highly focus on to the best practices and it is not the optional one. इसमें ऐसा नहीं है कि आपकी अपनी चॉइस है, आप चाहेंगे तो यूज़ करेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं यूज़ करेंगे. नो, यू आर बाउंड टू फॉलो सच बेस्ट प्रैक्टिसेस इफ़ यू वांट टू गेट द एडवांटेजेस ऑफ द ERP. इफ़ यू वांट टू गेट द positive effects of ERP, then you have to do it. You have to focus on the best practices. Next one is increased efficiency. With the help of ERP, the prime advantage of ERP is that it increases the efficiency per person because it provides you the availability of data under the same umbrella. Integrated data आपके पास अवेलेबल है. आपको डेटा कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट जो कॉस्ट लगानी पड़ती थी वो रिड्यूस हो गई है बिकॉज डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. सो इट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट, राइट? Another parameter or another advantage of ERP is that adaptability. ERP has such a tendency, such a feature, such a flexibility with it that as the business environment keep on changing, so ERP adapts that changing business environment accordingly. इसके अकॉर्डिंग अगर बिजनेस सिनेरियो में कोई चेंजेस आए हैं तो ERP के अंदर ऐसे प्रोविजंस अवेलेबल हैं, ऐसी प्रिविलेजेस गिवन हैं जिसको यूज़ करके हम उसकी अडेप्टेबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, राइट? अनदर इज रिड्यूस साइकिल टाइम. नाउ लेट अस डिस्कस दिस पॉइंट दैट व्हाट डू यू मीन बाय द रिड्यूस साइकिल टाइम. इफ ए प्रोडक्ट हैज़ टू रीच इन द मार्केट इन 2 months, with the help of ERP
that product can hit to the market in just 15 days. मीन्स 1.5 month का टाइम बच गया है. क्यों? क्योंकि पहले डेटा जोग्राफिकली भी डिफरेंट एरिया पर स्टोर होता था. अगर जोग्राफिकल नहीं है तो उसकी चेनिंग मेंटेन करने में, फ्लो ऑफ डेटा को मेंटेन करने में बहुत टाइम लग जाता था. फ्लो नहीं समझ में आता है. ERP has channelized all these parameters and ultimately has affected the market time of a product by reducing the cycle time. एक काम को करने के लिए जितने प्रोसेसिंग या जितने साइक्लिक टाइम लगते हैं उसको अफेक्ट कर दिया है ERP ने. दिस इज अ पावरफुल फीचर ऑफ ERP that it has reduced the cycle time. Now, can you think about the disadvantages of ERP? Yes, there are some disadvantages of ERP also. First one is expensive. Yes, to have an ERP software in the company is not an easy work because it involves the investment of lots of money. That is why it is said to be expensive. If any company wants to channelize their data or channelize their way of working in terms of ERP, but that company doesn't have financial background और फाइनेंस की कुछ इश्यूज हैं, तो वो चाहकर भी इस फीचर्स को अवेल नहीं कर सकते या इस सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिवनेस. सो दिस इज कंसिडर्ड एज एन डिसएडवांटेज ऑफ ERP बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव. Not only expensive, another disadvantage is time consuming. Whatever you are doing, whatever processing you want to apply, it takes time to implement. It's not like that कि आपने enter किया और डेटा निकल के बाहर आ गया. No, it will take some time. And if say there is some problem in the ERP software, then the maintenance of the same is too costly. This is another disadvantage. एक ऑर्गेनाइजेशन के पूरे वर्किंग सिनेरियो में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उन सब को हमारा ERP ऑल ऑफ ए सडन एक ही पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इंस्टेंटली रिमूव नहीं कर सकता. आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज कंपनी में ERP सॉफ्टवेयर आया, 10 दिन बाद आपको सारे एविल्स जो अपने डेटा पार्ट पे है या डेटाबेस पार्ट पे है या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, मार्केट लेवल पे है, सब एकदम रिमूव हो जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इट विल टेक सम टाइम. It requires time, patience and effort at all levels to build up the disciplines in order to adapt it. If you want to, in order to adapt it. अगर आप वाकई इस ERP सॉफ्टवेयर की फैसिलिटीज़ को, फीचर्स को अवेल करना चाहते हैं तो यू रिक्वायर कॉस्ट, बहुत सारा टाइम चाहिए, एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पेशेंस. डोंट थिंक कि इमीडिएटली आंसर आना शुरू हो जाएगा. यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, सम मंथ, सम ईयर्स इवन, इफ यू वांट टू रिमूव ऑल लेवल्स ऑफ योर डेटा ऑफ योर सिस्टम. तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. बेसिकली इट्स एन कंटिन्यूस प्रोसेस दैट इज टू बी डन टाइम टू टाइम अंडर द न्यू एनवायरनमेंट ऑफ द ERP. अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू फॉलो सम डिसिप्लिन्स ऑल्सो. हमें डेटा कैसा स्टोर करना चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, क्या उसके प्रिसीजन वैल्यू होनी चाहिए. ऑल दीज आर द पैरामीटर दैट नीड टू बी कंसिडर्ड इन द ERP. राइट. नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स ऑफ द ERP पैकेजेस दैट आर पॉपुलरली यूज्ड इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज. फर्स्ट वन इज SAP. SAP stands for System Application and Products in Data Processing. Oracle. Another ERP package is Oracle. Intenta. Third package is Intenta. INTENTA. You have to spell like this. PeopleSoft. Another software of the ERP is PeopleSoft. Quad. Next one is Quad. That is QUAD. Spell, आप इसको ऐसे स्पेल करेंगे. BAN. BAAN. BAN. JD Edwards, Marshall, and last is SSA. These are the examples of some popularly known ERP packages which are being used at the industrial level by different organizations who can afford to have such a ERP packages. Because if any company wants to have such packages, then out of these given list,
you can have one or two. Now let us discuss some benefits of using the ERP. By using the ERP software, you are able to have online accurate information. Availability of online accurate information is there with the help of ERP. Customer, yes, improved customer service satisfaction. सर्विसेज भी इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि क्विकली हो रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है. यू आर एबल टू सेटिस्फाई द कस्टमर टू देयर लेवल. रिडक्शन इन इन्वेंट्री, एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइन, सॉफ्ट कॉपी की फॉर्मेट में हो रहा है. एट मोस्ट ऑफ द टाइम नो हार्ड कॉपी इज रिक्वायर्ड, नो हाउस कीपिंग एक्टिविटीज आर देयर, सो इट अल्टीमेटली रिड्यूस इन द इन्वेंट्री कॉस्ट. Accuracy in costing, hence improved cost control. ERP is responsible for bringing the accuracy into the costing system. So ultimately it improves the cost control. With the help of ERP, we are able to have optimum utilization of the resources or best utilization of the resources. Improvement in productivity and profitability. जब आप ERP से काम करवाते हैं प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल लेवल पे या एंटरप्राइजेज लेवल पे, तो पर पर्सन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है. पर पर्सन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होने से क्या होगा, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी. एंड दिस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन. वी विल हैव अ बेटर फाइनेंस, वी विल हैव बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ईच अदर. With the help of ERP, we are able to improve the supplier relationship by building up data warehousing, data mining and decision support system. Data warehousing is such a concept that is different from that of the database, in which we have to maintain the past history of the data. कस्टमर का पास डेटा अगर हमें स्टोर करना है या एम्प्लॉय का पास डेटा अगर हमें स्टोर करना है, तो वी आर हैविंग द डेटा वेयरहाउस फॉर दैट पर्पस. Because database is responsible for maintaining the current data, while data warehouse is responsible for maintaining the past data. And by applying the data mining, some operational activities over this data warehouse, we are able to have, or our decision makers are able to have better decision making system, because ERP help in supporting the decision making, right? Now let us discuss some types of applications or ERP application. So basically there are three types of ERP application. First is finance, next is human resource, and next one is manufacturing and logistics. When we talk about the finance, it means for bookkeeping, accounts receivable or accounts payable, general entries, ledger maintenance करना होता है, फिक्स एसेट को कंट्रोल करना होता है, कॉस्ट कंट्रोल करनी होती है. ऑल दीज आर द एरियाज दैट कम्स अंडर द फाइनेंस कैटेगरी, जहाँ पर हम ERP को अप्लाई कर सकते हैं. अनदर इज ह्यूमन रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर फॉर हैंडलिंग पर्सनल रिलेटेड टास्क फॉर कॉरपोरेट मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़. HR एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट है, वकेशंस हैं, पेरोल है, सेल्फ सर्विसेज हैं, राइट. सो HR में हम क्या बात करते हैं, लेट एम्प्लॉय चेंज देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. अगर आपको एम्प्लॉयज़ को ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे देते हैं कि वो अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेंज करता है, सो इट्स ए काइंड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एप्लीकेशन एरिया ऑफ ERP, राइट. अनदर एंड द लास्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स. इट कवर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द लॉजिस्टिक्स, इसमें हमें क्या होता है, इट कवर्स द टेकिंग ऑर्डर्स, प्लानिंग प्रोडक्शन एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर. फॉर एग्जाम्पल मटेरियल का मैनेजमेंट करना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज करना, दे ऑल कम्स अंडर द मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स. विद दिस वी आर गोइंग टू फिनिश दिस सेशन. थैंक यू.